So I really feel that we should all acknowledge the role that these voices जो रेडियो के थ्रू रिपब्लिक डे को सारे like they take us to each and every home through their voices. I really think we should acknowledge them here today. बिल्कुल प्रवीण, और इसीलिए हम हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे. ये इनकी आवाज़ें हैं जिन्होंने रेडियो पर परेड की शान को जिंदा रखा और हम सबको प्राउड महसूस करवाया. तो चलिए फिर आईआईसी से राजपथ का सीधा प्रसारण शुरू करते हैं. We have with us today Mr. Sitanshu Kar. Sir is a 1983 batch officer of Indian Information Service and former PIO, who will be conversing with commentators of All India Radio, Ms. Ritu Rajput, Mr. D. Andrew, and Ms. Tanvi Taneja. Please keep clapping till they come on stage. Actually, this session is also in a way a continuation of the earlier one. Same josh that the Republic Day parade actually generates. There is just one question: who has not seen the Republic Day parade at all, ever on the ground? Okay, most of you have not seen. Looks like most of them. And how many of you have listened to the All India Radio commentary? Oh, this is great. A great compliment, huh? Okay. Now, I must inform you that going to the Republic Day parade to see it has become much simpler from this year. Actually, you can book it, and you can book it for your relations also from anywhere in the country. And it's like book my ticket. It has become more democratized now. You can book it from anywhere in the country, and you get the seat number actually, and that is how it has become much easier. So when it is announced, you should do it on the day one to get into it. Now coming to the this Republic Day celebrations, I would like to tell you that it all started, as you know, in 1950, the first, when India became a republic, the first Republic Day. And I want to show you the pictures of it, how it was celebrated, and how we have evolved over the years before we start the conversation. So that will set a stage for, you will see that how it has actually changed. Because the first one was an improvement over the 1947, when India became independent. The first celebration was actually quite chaotic. It happened over there in Rajpath. And now the first one, they were organized, the Republic Day, and this is how it was. Now you can see the journalists, I mean the photographers and the videographer, they are all there. And this happened in the Irwin Amphitheater, that is called the Major Dhanchand National Stadium now. So it is happening over there. It was a kind of confined one, and this is the picture of the journalists who are covering it. And this is the gun salute which takes place. Nowadays they do through battery pack, but that time they used to fire it actually. And this is the panoramic view of the inside the amphitheater. Dr. Rajendra Prasad, he took the salute, and the parade is taking place. Guest was Mr. Sukarno. He was the president of Indonesia. Sardar Baldev Singh, he was the defense minister, is there, and Mr. Nehru and Indira Gandhi, they can be seen. And this is how the films division was doing the coverage. The first time, it went through the Kannada circus, the parade, and you can see the number of people who are eagerly watching it. And then the president goes to that Daryaganj area, because it terminated at Red Fort. So, and now it is 1954. We have come to the Rajpath. That time it was called the Kingsway Road. Yes, and you can see the president so close to that Rajpath. And this is the panoramic view from the top of India Gate, taking the salute.
I'll be making some references to all these pictures, so please watch it carefully. And this is another view of from the India Gate. And in 1972, as you know, in 1971, the war was there, and it was only after a few days that the celebration was taking place. So all the tanks had not come. Many of our soldiers also, they had not come back. So it was a truncated affair. And it was kind of terminated near that Rafi Marg. So they, from Vijay Chowk in that area, you can see those pictures now. And the three service chiefs, very happy and in a great mood with the president. Now, to 2023, this year, these are the pictures of this year. The Prime Minister is paying his homage at the National War Memorial. And you can see the background, how it has now pushed behind. The saluting desk has gone behind, and it has become more organized now. Now, somewhere you can see also a mic on the ground. That is a purpose for that. And these are the views of the from a different angle, from top angle, these pictures have been taken. The commentary box is somewhere near, above that, there is a control room, and all the commentary boxes are there. Okay, fine. Thank you. So now the thing is, when we talk about the commentary of the Republic Day celebrations or the Republic Day parade, there are three commentaries which are going simultaneously. There is one which is called the on-site commentary, where the people who are there, they can hear it in and around the saluting desk, right up to the India Gate. Then there is the commentary by Doordarshan, which is also covering it. And the third one is All India Radio, which is doing it. Now, the base material for their commentary is provided by the Directorate of Public Relations in Ministry of Defense. But they improvise on it. It is not like hard and fast rule that they have to follow it, but this is the base material, the basic DAW, and then they can improve on it. And that is how the commentary goes on. Now, I'll now converse with the commentators. Dr. Rajput, Ritu Rajput, she has been doing it for many years. And my first question is, when did you do it for the first time? Did you have goosebumps? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इस अवसर के लिए। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। राजपथ से मैं रितु राजपूत अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रू और तन्वी तनेजा के साथ अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गणतंत्र दिवस हमारे गौरव का दिन, गणतंत्र दिवस हमारी आस्था का दिन, गणतंत्र दिवस हमारे पर्व का दिन, हमारे उत्सव का दिन। और आज वही दिन पूरे जोशो खरोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ हमारे बीच में है। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक वानगी थी, हल्की सी झलक, जब हम राजपथ पर, जिसे आज कर्तव्य पथ कहा जाता है, उसकी। और जैसा कि माननीय हमारे साथी सुधांशु जी ने प्रश्न किया कि कब से, शुरुआत तो सन 1983 से हो गई थी हल्की हल्की रेडियो पे, लेकिन जब पहली बार कमेंट्री का अवसर मिला तो वो था सन 1991। मैं पोर्ट ब्लेयर में पोस्टेड थी और वहाँ पे जो शहीद स्मारक है, वहाँ पर गणतंत्र दिवस का समारोह था। और मुझे अचानक हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि रितु, तुम हिंदी में कमेंट्री कर सकती हो। तो मैंने कहा, हो भाग्य, मतलब नेकी और पूछ पूछ। तो हम बहुत तत्पर हो गए। लेकिन जब माइक सामने आया तो मुझे चिंता हुई मेरे 9 महीने के बेटे की, जिसे मैं गोद में लेके चलती थी, कि ये तो हल्ला मचाएंगे। और इनके पिताजी पीछे से, मेरे हस्बैंड भी तब रेडियो में काम करते थे, आजकल बीबीसी में हैं। तो
इत्तफाकन ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को इंग्लिश में कमेंट्री करने का और मुझे हिंदी में कमेंट्री करने का न्योता मिला, तो हमारे बच्चे को कौन संभाले। तो हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ इंजीनियर साथी थे, युवराज बजाज जी, बहुत ही कर्मठ अधिकारी। तो उन्होंने मेरे बेटे को गोद में लिया और कमेंट्री शुरू हुई। लेकिन यकीन मानिए, उस वक्त का जो कंपन था, उस वक्त की जो थरथराहट थी, शब्द भूल गए और आवाज़ जिससे अटक सी गई गले में, और माइक यूं 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 हो रहा है, मतलब कंपन ही कम नहीं हो रहा है हाथ का। तो ये पहले वक्त की अनुभूति थी। लेकिन जब कमेंट्री करके वहाँ उपराज्यपाल रहते हैं, हम वापस आए स्टूडियो में, तो इत्तफाकन सभी ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया कि रितु ठीक ठाक कर लिया, अच्छा कर लिया तुमने। तो सर ये पहली शुरुआत थी मेरी। लेकिन उसके बाद एक तो ये कि रेडियो में बहुत अरसा नहीं हुआ था आए हुए, तो जाहिर सी बात है कि संस्कार भी नहीं थे भाषा के, आता भी कुछ नहीं था। उर्दू का उच्चारण, हिंदी का उच्चारण, अंग्रेज़ी का उच्चारण, और रेडियो तो आवाज़ का माध्यम है, उच्चारण का माध्यम है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो आप एक अच्छे रेडियो ब्रॉडकास्टर नहीं बन सकते। सन 2000 की बात है, रफ़ी मार्ग से कमेंट्री करने का मौका मिला। आपको शायद मालूम हो कि हम राजपथ से तो रेडियो की कमेंट्री करते ही करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जन साधारण बैठे हुए होते हैं दीर्घाओं में, उनके लिए पब्लिक सिस्टम पर कमेंट्री हमारे यहाँ के ही एंकर्स करते हैं। रेडियो के ही जो बहुत जाने माने स्वर होते हैं, उनकी आवाज़ में कमेंट्री आप तक पहुँचती है। तो वो पहला मौका था जब गणतंत्र दिवस पे कमेंट्री करने का मौका मिला, और वो भी ठीक ठाक हो गई। तो तब से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कहते हैं ना, चोली दामन का साथ रहा, शब्दों का, आवाज़ का, रेडियो का। और यकीन मानिए, इससे सुंदर माध्यम जो आपको निखार दे, संवार दे, तराश दे, सिर्फ रेडियो है, सिर्फ रेडियो है। बहुत से माध्यम हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ऐसे गुणीजनों के बीच में पले हैं, पले से मेरा मतलब रेडियो में जिन्होंने हमारी परवरिश की, गिरिजा कुमार माथुर जी हों, पंडित रविशंकर जी हों, लक्ष्मी नारायण लाल जी हों, मतलब किसका मैं नाम लूँ, महादेवी वर्मा हों, निराला हों। उस दौर में हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन उनके जो शब्द थे, उनकी जो शैली थी, उनका जो अंदाज़ था, वो जैसे धीरे धीरे दिल में उतरता रहा। वो न्यूज़ रीडर देवकीनंदन पांडे जी, अजीज़ हसन जी, कृष्ण भार्गव जी, अखिल मित्तल, अश्वनी त्यागी, किस का मैं नाम लूँ, इंदु वाही, विनोद कश्यप, ऐसे हजारों स्वर जो सोना थे और जिन्होंने शब्दों और उच्चारण के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया कि हर कोई सोचने लगा कि काश मैं भी रेडियो पे जा पाता। और यकीन मानिए, आकाशवाणी की धरती किसी मंदिर से कम नहीं है। वो हमारी तपोभूमि है, हमारी तपस्थली है, जहाँ जाकर हम तपस्या करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और हमारे वरिष्ठ जन, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे गुरुजन, जो न जाने कहाँ कहाँ की सामग्री, कहाँ कहाँ का ज्ञान बांटा करते थे, और हम हाथ फैलाए खड़े रहते थे कि काश हमारी झोली में भी कुछ गिर जाए। तो ये है रेडियो की ज़मीन। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस कमेंट्री की, क्योंकि समय सीमित है, तो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत आसान नहीं होता ये पथ। एज ए कमेंटेटर काम करना बहुत कठिन होता है। जब Can we come back to the Fine. student part of Fine, sir, fine. Because I want to check with Tanvi. Tanvi actually did the commentary in 20 and 21, especially when the COVID was raging, and she was down with COVID, and she was having a long suffering, and from that she comes back to do the commentary. What was your experience like, Tanvi? Good morning, everyone. Just like Rituji mentioned, AIR is a sacred place. When I first joined AIR as a casual assignee, that was in 2012.
तो हमें एक चीज़ बोली गई थी, यहाँ की ईंट ईंट में इतिहास है। तो हम भी, जैसे मैम ने बोला, अपने गुरुजनों की बात की, तो ये हमारे गुरुजन हैं। हम भी कोशिश करते थे कि कहीं किसी कॉरिडोर में कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टोरी मिले तो कुछ हम सीख लें। फिर हर ब्रॉडकास्टर का ड्रीम होता है, ठीक है, एयर पे जाना एक ड्रीम होता है, अच्छा करना होता है दूसरा ड्रीम, बट रिपब्लिक डे की कमेंट्री अगर आपके झोली में आ जाए तो दैट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरी ब्रॉडकास्टर। तो व्हेन आई वाज फाउंड गुड इनफ, आई फर्स्ट ऑफ ऑल वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कंधों पे आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि अपने लिए तो अच्छा करना नहीं, अपने गुरुजनों के लिए अच्छा करना है, कहीं कोई उनको ये ना कह दे कि आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। आई विल जस्ट क्विकली कम बैक टू द एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड कोविड। सो आई फर्स्ट डिड इट इन 2020। दिसंबर तक कोविड वुहान में था, पर अभी सबको नहीं मालूम था कि को तो बाद में आया, पर एनीवे जनवरी 2020 वी 3 of us were debutants. So actually होता क्या है, 4 commentators are there, 3 are at the dais and 1 is used to be at the Amar Jawan Jyoti, which later came to be being present at National War Memorial. So Andrew sir will share his experience of doing it from the National War Memorial. So when we went for the rehearsals, okay, so tradition क्या है All India Radio में कि आप जब करते हैं तो आपको रिहर्सल्स में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर आपको फीडबैक दिया जाता है। अब क्योंकि हमारा पहली बार था, हमको नहीं मालूम था कि ये तो ट्रेडिशन है, तो हम, मैम तो अभी गूज़बम्प्स की बात कर रही थी, मैं आपको बताऊं मेरी रिहर्सल में शर्ली मैम जी इज़ ऑल्सो देयर, शी वाज ऑल्सो इन आवर टीम। सो वी वर मेकिंग आवर नोट्स वेरी डिलिजेंटली, अच्छा ये हो रहा है, ये दस्ता आ रहा है, अच्छा अब इसकी ये ड्रेस है, ये सब तो करते ही हैं, सब करते हैं। जब हम बैठे बूथ में, चलो हमें सीनियर्स ने कहा आइए आपको बूथ दिखा के लाते हैं, हम बूथ में गए, बूथ में बैठे तो देखा अच्छा ये माइक है, पहली बार वो कमेंटेटर्स वाला माइक उठाने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा, अरे ये माइक होता है। तो मनोज जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा बोलना शुरू करिए, तो बिल्कुल बत्ती गुल क्या बोले, बोलिए अरे, एंड आई मस्ट टेल यू आवर सीनियर्स were so supportive, they could, I froze for a while, I just could not speak even in the rehearsal, forget the day when it comes. So I was like that, I was shaking. So Manoj ji said, just see what is happening outside and just say it, just be natural. And then slowly we gathered pace, then we did it, and of course the tradition was it was getting recorded. We didn't know then, thankfully, thank God we didn't know, pata hota to aur batti gul hoti. So but then then the tradition is on All India Radio. See, in All India Radio we are nurtured as a broadcaster, and I feel so grateful that we have been blessed with seniors like Dr. Ritu ji, Andrew sir, Manoj Mayankar ji. Everyone there actually prepares you, handholds you to do your best. So when of course even in the canteen conversations in All India Radio, कोई ना कोई किसी ना किसी टेबल पे बात हो रही होती है, and I still remember I was what do you say, I was just beginning my journey, and there was somebody talking on the other table, some senior guiding some junior, and they were saying every spoken word should stand out like a pearl in the necklace. So this is what I picked up, and I took it in my journey, I applied it everywhere, एक शब्द, और फिर हमारे सीनियर्स तो हमें कभी कुछ गलत बोल दें तो गलत, नुक्ते पकड़ना और ये सब तो चलता ही था. Now 2021, I was down with COVID, and I knew I was really like everyone. COVID तो हो गया था, but long COVID के symptoms मेरे में अभी भी थे. I was feeling breathlessness, and I just was feeling so nervous for the commentary, but I was feeling कि maybe I'm not able to give my best. So what do I do? But again, my seniors were very helpful. They said, Tanvi, करना तो आप ही को है, अब आप देखिए आपको कैसे recover करना है. Then I don't know what happened. Some electricity, the wave of electricity, Sitanshu said inside me, I have to do it. My seniors have faith in me. I have to do it. So of course, when we went 2021, everything was different. The number of crowds were limited. They were all wearing masks. See, one thing is that you have to present as a commentator what is happening. But that feeling, the feeling of coming together as a nation, even the Jawans, they are there right from 3, and all the days, but even on the D-Day, 3 o'clock when you enter,
It's really a spectacle, all patriotic songs in the air. They are filled with the gusto, the patriotic feeling. It just automatically comes to you. I forgot what was happening inside me. I was filled with the spirit of, India. And just to sum up, after doing Republic Day commentary, it is obviously an exhilarating experience, but what one feels is that one has completed an entire pilgrimage of India. That's what we feel. In the Republic Day celebrations, there are two events. Actually, they are the most challenging, in terms of commentary. One is when the parade starts. Before that, there is the Prime Minister going to the National War Memorial and paying homage on behalf of all of us, the nation, to the fallen heroes. The difficulty there is, it is absolutely silent. And there the commentary has to be given, and you have to arouse also that patriotic emotions in the people. And I think Mr. Andrews, he does that with great effect. The second event is, of course, I'll come to that later. That is when the highest gallantry award is presented. The Ashok Chakra or the Paramvir Chakra. But first of all, I'll ask Mr. Andrews how he prepares and how he does that particular phase of the commentary. Thank you so much, sir. My God. In fact, I would like to say that my first commentary I did was from Rajpath, that is Kartavya Path, which is right now it's Kartavya Path. And this was way back in 2010. That is, and I should say that my dreams were fulfilled. I always wanted to do the commentary for Republic Day Parade. And my dream came true in the year 2010 when I did the commentary for the first time. I'd never done the commentary from Amar Jawan Jyoti. Manoj Mayankar used to always do it in English. And Jaininder Singh used to do it in Hindi. But in 2020, I was asked to do from Amar Jawan Jyoti, and that was for the first time when the new Amar Jawan Jyoti was constructed at the Sea Hexagon. I was so nervous, I didn't know what to do. So then I went to Mr. Manoj Mayankar, I asked him how to do. He said that, see, all you have to do is just say what is happening around, and then just make some get some details, make some preparations, write some notes. I said, okay, fine. So with that in my mind, I used to go every day to the Amar Jawan Jyoti, and they've got all the busts of all those soldiers who had won awards. That is the Ashok Chakra, the Paramvir Chakra, the busts were there. I noted down the details. Every detail was given against each of those busts. So I noted down the details, and the army people were so helpful. They used to send one person. He used to say, sir, you go in this order. You have to take this order, you'll cover this, and you'll come to the last one. So that is that I followed those things. I made a lot of notes, and then I used to go to the place. I noted down all the details, how the Prime Minister will come, how he'll walk to the front with the 3 army chiefs, the 3 defense chiefs, and how he'll lay the wreath. So I saw the rehearsals. In fact, I should say that since it was going to be my first commentary from Amar Jawan Jyoti, I really worked hard. I spent sleepless nights. My wife used to always say, well, they've given you a task, work sincerely. She has always been a moral support for me. So she said that work sincerely, you pray and then do your work. So that gave me real strength because I know he's there with me. So I went with full confidence on the day of the commentary, early morning. I left, the vehicle came and picked me up at 4 in the morning. I didn't sleep the whole night. The previous night I didn't sleep. I was so nervous. But still, after coming to the venue, when I went and sat inside the commentary booth, I was so relaxed. I thought, finally, I've come over here. Now the main part is doing the commentary for the radio. And exactly at 9 o'clock, the commentary started. The announcement was made. And from Rajpath, they said, over to Andrew at Amar Jawan Jyoti. When they told that, initially, I had hiccups. I had my throat, it was stuck, I should say. But then I gained confidence. When I started speaking,
The engineers were there sitting inside, and I said, "Sir." So they also gave me confidence, and it went off very well, I should say. That really gave me confidence, you know. And after the commentary was over, we walked down, I used to walk down slowly to the saluting days booth, the radio booth. So we walked down slowly, and there they said that, "Andrew, your commentary went off very well." So that gave me a lot of confidence, you know. I was so relaxed. After that, you won't believe, but still my hands were shaking. It's not that it got over immediately, but still my hands were shaking. But I was very pleased that my commentary went off very well. And it's not a very easy thing. It's total silence over there. You have to maintain a very serene atmosphere, because that is a place where they are going to pay homage to those soldiers who gave their life for our freedom, for our safety. And it's because of them that we have good sleep in the night. We feel so safe and secure. Thank you, Andrew. Now, radio commentary is involves a lot of hard work, actually. There is a lot of research one has to do, and you have been given the basic material, but you have to actually visualize in your mind how the show will go on for those 90 minutes. And you have to prepare yourself with a lot of material, lot of supporting material, and also a lot of fallback material. So I would ask Rituji how she prepares for this kind of commentary. पहली चीज़ तो ये कि हमें किसी भी कमेंट्री के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि हम कमेंट्री कर कहाँ से रहे हैं, स्थान क्या है, औचित्य क्या है, इवेंट क्या है, और उसके आसपास का परिदृश्य क्या है. जब ये सारी चीज़ें आपके जहन में होती हैं, अगर मैं सिर्फ गणतंत्र दिवस की ही बात करूं, तो सबसे पहले राजपथ, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और वो 2.5 किलोमीटर लंबा राजपथ, उस राजपथ पर आँख क्या क्या देख रही है. और तुम वहाँ पर क्यों हो? तुम वहाँ पर इसलिए हो कि जितने हज़ारों करोड़ों लोग देश में या विदेश में तुम्हें सुन रहे हैं, वो गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन सके. वो ये महसूस करे कि मैं गणतंत्र दिवस समारोह परेड को देख रहा हूँ. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, आवाज़ तो है ही, नाक, आँख, कान, स्पर्श, सभी कुछ बहुत मायने रखता है. अब प्रश्न उठता है कैसे? हम अपने श्रोताओं से अक्सर कहा करते हैं कि आज आप हमारी आवाज़ की आँखों से देखिए. आज गणतंत्र दिवस परेड समारोह आप हमारी आवाज़ की आँखों से देखिए. तो हम ऐसे बोलें कि वो सब कुछ नज़ारा उनकी आँख के सामने पूरा का पूरा हूबहू साकार हो जाए. अब प्रश्न उठता है कि नाक क्यों? नाक इसलिए कि वहाँ पर कितनी तरह के पुष्प हैं. गुलबहार है, गुलदाउदी है, बेला है, चमेली है, डहेलिया है, न जाने कितनी तरह के फूल हैं. जब उस गंध को महसूस नहीं करोगी तो बोलोगी कैसे, बताओगी कैसे? तो अक्सर आपने ये पंक्ति सुनी होगी, वातावरण में व्याप्त मधुर सुगंध, बेला की सुगंध बिल्कुल आपके, मतलब आप ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बोला जाए कि वो गंध आप तक पहुंच जाए. अब आप कहें कि स्पर्श की क्या बात है? स्पर्श क्यों? वो भी बहुत ज़रूरी है. छू के देखना है ना कि फूल मुलायम है या कर्रे हैं, गेंदा है, चमेली है, क्या है, लड़ियाँ हैं. दूसरी चीज़, ये जो गालीचा बिछा है माननीय राष्ट्रपति महोदय के नीचे, मखमल का है या टाट का है, जरदोजी की कढ़ाई है या चिकन की कारागिरी है. तो ये सारी चीज़ें आप छू के देख के महसूस करते हैं. वातावरण में आर्द्रता है, वातावरण में नमी है, तापमान ज़्यादा है. जब ये सारी चीज़ें आप महसूस कर लेते हैं, तभी तो आप बता पाते हैं कि तेज़ गर्मी है, पसीना हो रहा है. नहीं तो शब्द आपके पास हैं, पढ़ते जाइए, बोलते जाइए. जब तक मेरा श्रोता ये महसूस ना कर ले कि भाई गर्मी लग रही है, पंखा चला लो, तब तक कमेंट्री सफल नहीं. इस तरह से बोलिए कि हूबहू एक एक चीज़ उनके जहन में उतर आए.
तो समूची इंद्रियां काम करती हैं। फिर उसके बाद कि आपको इवेंट क्या है, मान लीजिए गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, या संसद भवन है, या राष्ट्रपति भवन है, तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है। आपको पता होना चाहिए आपके बाएं हाथ पे रायसीना हिल पे राष्ट्रपति भवन है। आपको पता होना चाहिए कि राजपथ के दोनों ओर खूबसूरत क्यारियां हैं, हरे भरे वृक्षों से आच्छादित वातावरण है। पत्ते कैसे हैं, ओस तो नहीं पड़ रही, धुंध तो नहीं है, आसमान कैसा है, परिंदे उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं। जो जो आँख देखती है वो सारी चीज़ें तैयार करने के लिए आपको वहाँ का वातावरण महसूस करना होता है। और एक, चूँकि बहुत संक्षेप में मुझे अपनी बात रखनी है और इशारा मुझे मिल चुका है, मैं एक जिक्र ज़रूर करूँगी कि आपके आसपास चूँकि बहुत वरिष्ठ जन होते हैं, लगभग 20 फुट की दूरी पे सलामी मंच होता है जहां माननीय राष्ट्रपति, हमारे गणमान्य अतिथि, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विराजमान होते हैं। उसके ठीक 20 फुट की दूरी पे हमारा कमेंटेटर बॉक्स होता है। तो आप कई बार उन्हें देखते हैं और कभी लाउड हो जाते हैं एक्सप्रेशन बताते बताते, और ये काफिला गुजरता हुआ। जब आप तेज़ी से बोलते हैं आपका स्वर भी ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो जोश आपको अपने श्रोताओं को महसूस कराना है। वतन की खाक तुझे दिलकशी मुबारक हो, ज़मीन हिंद को ये रोशनी मुबारक हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको बीच बीच में डालनी पड़ती हैं। या फिर जैसे ही आपके अतिथि पधार रहे हैं, तमाम रास्ते गुलजार हुए जाते हैं, न जाने आज किसकी आमद है, कौन आने वाला है, कि सारे फूल ही फूल बिछे हुए रास्ते में। तो इस तरह की जब आप शैली में बात करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि बगल में कौन बैठे हैं, आपकी आवाज़ इतनी ऊंची ना हो कि उन तक पहुंचे। सन 2015 बराक ओबामा जी हमारे देश में आए थे, उनकी पत्नी मिशेल आई थी, और बहुत ही प्यारा इंसिडेंट हुआ था। बस जल्दी से शेयर करूंगी आपसे कि मैं कमेंट्री कर रही थी, उन्होंने यूं, थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऊंची हुई, उन्होंने यूं करके इधर देखा और यूं हाथ हिलाया। अब हमारी परंपरा तो हाथ हिलाने की नहीं है, हमने तो सजदा कर दिया। तो वो इतना खुश हो गई, मतलब बहुत उनके चेहरे की खुशी मुझे आज भी याद है कि बराक ओबामा जी ग्रे कलर का सूट पहने हुए थे और उनके अंगरक्षक ने उन्हें ओवरकोट पहनाया। बारिश हो रही थी, बूंदें पड़ रही थी, वो छाता खुद पकड़े हुए थे। तो ये छोटी छोटी बातें जब आप बताएंगे नहीं कि वो छाता खुद पकड़े हुए हैं, मिशेल लंबा ओवरकोट पहने हैं, उनके सुनहरे बटन हैं, रेड कलर का गले में मफलर डाले हुए, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कमेंट्री की जान होती हैं। लेकिन यहाँ पे तथ्य से परे नहीं होना है। जो सामग्री आपके पास है, जो ऑफिसर्स वहाँ से गुजर रहे हैं, जो रेजिमेंट गुजर रही हैं, उनका डेकोर, उनका पद, उनके शौर्य वाक्य बिल्कुल सही सही होने चाहिए। आप रक्षा मंत्री को रक्षा राज्य मंत्री कह दें, गर्दन कटी, मान लीजिए। और इसके अलावा एक हायरार्की होती है, एक क्रमबद्धता होती है जिसके चलते काफिला आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके रक्षा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आ गए, फिर CDS आ गए, फिर रक्षा सचिव, फिर रक्षा राज्य मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर माननीय प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की कार का काफिला कितना लंबा है, 19 गाड़ियाँ हैं, 20 गाड़ियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति। तो वो क्रमशः एक एक करके अधिकारीगण अगवानी करते हैं। आप किसी का नाम आगे पीछे नहीं बोल सकते, ये गुनाह है कमेंट्री में। और गणतंत्र दिवस पर इन सब चीज़ों का हमें बखूबी ख्याल रखना होता है। समय का फिर मुझे इशारा हुआ है, सुधांशु जी। Actually, this was one incident. It was unexpected that day it rained so heavily when Mr. Barack Obama was the chief guest. But another very interesting and very difficult incident took place. That was in 2010. It was suddenly the fog descended, and it was so thick that you cannot see anything. Now in the commentary box, the commentators are there. What do they see? So उसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ता है, anticipate करना पड़ता है. So what we did was, there was one person with walkie-talkie right next to the road or the place where they will be, the marching contingent will be going, and there is another person in the control room who is taking that message
and conveying through signs and symbols that this is the one which has come, showing in the commentary. And that is how the commentary was carried out. At the end of it, I was asked, how did you manage that? Because the VVIPs, they are not seeing anything. What is going on? But how did you know that this was happening? So the explanation was that you have to always be prepared for some contingency or the other. You have to anticipate all kinds of problems to be ready for that. Actually, we are finishing almost, so the last... सर एक एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरे साथी एंड्रयू के बारे में है कि कमेंट्री में इस तरह से भी होता है. इजाज़त है? तो हुआ यूँ कि हम संसद भवन से, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, संसद भवन पर हमला हुआ था और हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे. तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष एक वहाँ आयोजन होता है. तो मेरे साथी कमेंटेटर एंड्रयू थे, मैं हिंदी में थी, और वहाँ पर होता क्या है, बड़ा ही ऐसा दृश्य होता है कि आपकी आंखें भर आती हैं. उनके परिजन आए हुए हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, उसको गोद में मां लिए चली आ रही है, जो जवान शहीद हुआ. तो कमेंट्री हमने शुरू की और बोलना शुरू किया, और माहौल एकदम डिफरेंट होता है. वो गणतंत्र दिवस समारोह का नहीं है, यहाँ पर शोक और श्रद्धा का वातावरण है. तो जब मैं बोल रही थी तो अगले मुझे आप माइक हैंड ओवर करना था एंड्रयू जी को. तो मैंने कहा और आगे का विवरण मेरे साथी टी एंड्रयू से. अब टी एंड्रयू साहब ज़ारो कतार रो रहे हैं, इनकी आंख से टप टप आंसू बह रहे हैं. उनका एंड्रयू, हम इशारा कर रहे हैं, मतलब बोल तो सकते नहीं माइक पे. जब मैंने देखा तो इनकी आंख में मतलब इतना भावुक वो क्षण होता है. लेकिन ये ठीक है, ये भावुक थे, संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन हम कमेंटेटर्स को ये इजाज़त नहीं है कि हम अपने पर्सनल भावों को वहाँ पर ऐसे माहौल में आड़े आने दें. तो इससे भी हमें बड़ा चौकन्ना रहना होता है. सर, Any final word that you would like to say, Andrew? And you? Yeah. When the Ashok Chakra or the Paramveer Chakra award is given, actually, I can share it with you that when we discuss in the rehearsal and other things, the whole effort is that every citizen must feel the lump in the throat. And there is only the voice which can bring that effect into that event. And I think over the years, All India Radio, Doordarshan, they have done extremely well in that kind of delivering that kind of emotion to the whole country. With that, I thank all the panelists, and thank you very much. All the best, and looking forward to seeing you at the Republic Day celebrations next year.